Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to show you how to cook a mutton mushroom masala. So let's start the video. Hello friends, welcome back to my channel. So today I'm going to show you how to cook a uh, mushroom dish my way. For that I have taken a mushroom, I have chopped into chunks. I have used button mushroom and pea, tomato, chopped tomato, slice chili, ginger, slice garlic, onion, and for the spice what we are going to use on the spice box we are going to use I'm going to use red chili powder, salt as per taste, and cumin, जीरा, ये जीरा यूज करूँगा और and then haldi, turmeric powder. That's it. Let's start the cooking. Let's keep it in the low flame. Hit कढ़ाई डाल दिया हम लोग ने. And कढ़ाई. Now I'm going to use some oil. I'm going to use mustard oil. You can see the oil. It's getting hot. गर्म हो रहा है. फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे ginger, garlic, फिर मिर्ची, chili, and we'll put onion, and then we'll put this one tomato और मटर. और ऑयल गर्म हो रहा है. अभी हम लोग डालेंगे जो इंग्रेडिएंट मैंने बताया था, ये सब इंग्रेडिएंट. और ये वाला नहीं डालेंगे, ये चाकू है. My style, this will be in my style how to cook mutton mushroom. Now we'll put ginger garlic. Why I didn't make paste? हमने पेस्ट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे को उसका स्लाइस खाना था, मतलब प्रोडक्ट रो का फ्लेवर डाल दिया हम लोग. प्याज थोड़ा सा डीप ब्राउन होने देंगे हम लोग. थोड़ा सा डीप ब्राउन के लिए. अभी हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी. cumin, अभी हम लोग now हम लोग ऐड करेंगे मटर, पी.
the seed butter will get softened. I'm not going to use that much of butter. अभी हम लोग ढक के रखेंगे इसे. We'll close the lid for some few minutes. So अभी देखते हैं, हम लोग lid हटा के देखते हैं कैसा हुआ है हम लोग का मटर और टोमेटो. कुक नहीं हुआ, सॉफ्ट होना चाहिए. उसके बाद हम लोग डालेंगे मशरूम. तो अभी देखते हैं. थोड़ा थोड़ा हो रहा है, शेयर करके देखता हूँ. मशरूम डालना है. मशरूम, ये रहा मशरूम. मशरूम और मशरूम, बटन मशरूम. One thing I haven't used here is that मैंने salt नहीं डाला अभी तक. हाँ, अभी मैं इधर salt डालेगा. Salt, और मैंने एक चीज़ भी नहीं डाला, वो है रेड चिली पाउडर. पहले रेड चिली पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो तीखा हो जाएगा. और salt as per your taste. थोड़ा सा और इसको लीड लगा के रख देंगे हम लोग बॉईल होने के लिए. सो अभी चेक करते हैं मशरूम क्या हुआ है, कंडीशन इसका बॉईल हो रहा है कि क्या हो रहा है. या देखो, अभी तो थोड़ा सा बॉईल हो रहा है. ये पानी मतलब सूखना पड़ेगा, इसको पानी को सुखाएंगे हम लोग. इसके बाद खाने के लिए रेडी होगा. लेकिन बहुत टेस्टी होता है भाई खाने के लिए. ये पानी सूख के ठीक ग्रेवी बन जाएगा, तब हम लोग इसको खाएंगे. बहुत टेस्टी होता है ये मशरूम खाने के लिए. आप लोग भी ट्राई करिए. हीट को थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देते हैं. अभी हम लोग ने हीट को हाई फ्लेम में रख दिया है. तो अभी मैं फिर से हीट को बंद कर देता हूँ. It. So we will, after this, we will do seasoning of coriander and we'll serve. You can see how it's going to thicken. Gravy is going to thick. Let's the lid again. Let's check again how it is.
This is so tasty. Only let's garnish it with the coriander. Oh my god, guys. It smells so yummy. बहुत उम्दा स्मेल कर रहा है. अभी सर्व करते हैं guys. So guys, here we go. Now we'll serve the mushroom, tomato. Guys, it's ready. Mushroom. To check out guys, if you like the video, please hit the like button, and friends, do not forget to share and please comment down below, and friends, to try once it how it is. It's really, the taste is awesome. And friends, if you have visited my channel for the first time, do subscribe to my channel and share. Thank you so much friends for supporting me. Keep supporting friends. Thank you. Hope you liked the video. Peace out.